Welcome back. The last few days have been horrifying for Hindus in Bangladesh. Hundreds of Hindu homes have been vandalized, businesses have been targeted solely on the basis of religion, and temples have also come under attack, forcing devotees to take shelter and live in complete fear. Now, the situation was so grave that Nobel laureate Muhammad Yunus, who has recently taken oath as the head of the interim government in Bangladesh, has cautioned the student leaders that if violence against minority continues, he will resign. Now, while congratulated Professor Muhammad Yunus, Prime Minister Narendra Modi called for return of normalcy in Bangladesh, ensuring safety and protection of Hindus and protection of all the minorities. Now, however, as far as the India bloc is concerned, their MPs who have been drawing parallel between the situation in Bangladesh as well as India have now refused to see the attack on Hindus as a reality of Bangladesh. They believe it, they in fact are saying that the objection, they have in fact objection to Prime Minister's post asking why did he specifically mention Hindus and not all the minorities? Listen in. As the Prime Minister, yes, he has said that Hindus and all other minorities. I think the number of Indians staying there, majority chunk may be Hindus. That is the reason by which he has mentioned the name Hindu, the term Hindu. There are also some elements are trying to have a polarization in this issue. What BJP is doing in India, same thing may be doing in Bangladesh also. In such a situation, specifically stating that this particular community, as well as the other minorities, that is a statement of the Prime Minister. Better to avoid the name of the religion. All minorities are equal. All minorities should be protected, including Hindu need not be specifically stated. It is not expected from the part of the Prime Minister. We all know what Prime Minister wants to do. He always believes in some other kind of politics. But Dr. Yunus, as Chief Advisor, has already started his appeal to those people that every community, all religious faith and others, needs to be protected in Bangladesh. We all hope that we wish Dr. Yunus is best of luck and hope that normalcy returns quickly, brotherhood and peace returns quickly in Bangladesh. हर चीज को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से क्यों देखते हैं भाई? हर चीज को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखना इनकी आदत हो गई भैया। आप ही लगवा रहे हो, जो मीडिया में उसके दूसरी भी तस्वीरें आ रही हैं। ये हिंदुस्तान के अंदर जो आप बता रहे हो, बहुत सारी तस्वीरें दूसरी भी आ रही हैं कि वहां के लोग खड़े होकर के लाठी लेकर के हिफाजत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें आप दिखाओगे नहीं, आप केवल एक ही हिंदू मुसलमान इसी को दिखाने का आप लोगों ने टेका ले लिया। बस हिंसा रुकनी चाहिए, 100% रुकनी चाहिए यार। किसी भी देश के अंदर इस प्रकार के माहौल नहीं होने चाहिए। सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी का होता है। मरने वाला हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मरने वाला इंसान है। इंसानियत की बात होनी चाहिए। But now the question is, can the India bloc MPs really deny the reality? Now, reports from Bangladesh have confirmed that Hindus were specifically targeted in these attacks. The ISKCON temple and Kali temples were attacked. Hindus in 27 districts were attacked. 2 Hindu councillors have reportedly been lynched as well. Now, in fact, the Jamaat-e-Islami there has also admitted the attacks on Hindu minorities in Bangladesh, calling for complete peace in the country. Now, the head of new interim government there, in fact, came on record to express his concerns too as far as the attack on minorities are concerned. Have a look. এই স্বাধীনতাটা আমাদেরকে রক্ষা করতেই হবে, শুধু রক্ষা করা নয়, এই স্বাধীনতার সুফল প্রতিটি মানুষের ঘরে পৌঁছাতে হবে। তা না হলে এই স্বাধীনতার কোনো দাম নাই। এই স্বাধীনতাটাকে পৌঁছানো হলে আমাদের শপথ, আমাদের প্রতিজ্ঞা যে আমাদেরকে এটা করতে হবে, ঘরে ঘরে পৌঁছাতে হবে। মানুষ যেন জানে যে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অর্থ হলো তার নিজের পরিবর্তন, ব্যক্তির পরিবর্তন, সুযোগের পরিবর্তন, তার ছেলে মেয়ের ভবিষ্যতের পরিবর্তন। As far as the BJP is concerned, they have called out the hypocrisy of India bloc Neta, saying that while Congress shed tears for Palestine, it shows complete contempt for Hindu plight. सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में बात भी कही कि वहां पर जो अपने लोग हैं उनकी भी चिंता की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहां पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि
नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी, तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। आज भी इंडिया अलायंस का मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं खत्म हुआ है। आज एक बयान ये आया, वो भी हिंदुओं के विरोध में आया है। फलस्तीन के बारे में बोल सकते हैं, अनेकों देश के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू वहाँ के माइनॉरिटी कहलाते हैं, उनका जो कत्लेआम हो रहा है, बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, मंदिरों को लूटा जा रहा है, मंदिरों को लूटना उनको नहीं दिखाई देता। हिंदुओं की सुरक्षा के लिए नहीं है। इंडिया अलायंस का एक भी नेता के नाम नहीं दिखाई दे रहा। Congress Party and India Alliance's true anti-Hindu face has been revealed once again. When Prime Minister Narendra Modi wished Mohammad Yunus, Prime Minister of Bangladesh, he categorically, specifically mentioned that safety and protection of Hindus and other minorities should be ensured. Priyanka Vadra and Rahul Gandhi have tweeted on numerous occasions on Muslims in Gaza. Eyes on Gaza, eyes on Rafah, but no eyes on the violence that's taking place on Hindus in Bangladesh. To this level, you will go to whitewash the Islamist bigotry and hatred against Hindus, to be in denial about Hindus being subjected to such violence. This shows their mindset. They talk about minority rights, but minority rights is not about vote bank politics. We'll get to more on this, but right now we're taking a really short break. We'll be right back with more news and updates. Stay with us.